Hello angels, welcome to the channel. Friends, let's have a quick recap of what we have learned till now. We have learned that solids are of two main types, amorphous and crystalline. And based on constituent particles and nature of interactions, we also classify crystalline solids into the four types. Till now, we have discussed it in the previous video. If you haven't watched that video, then please do watch it. Link for that video is in description of this video. Friends, here is a note for you that there are some solids which are known as polycrystalline solids, and in the polycrystalline solids they appear to be amorphous but have a microcrystalline structures. It means that polycrystalline solids are in between amorphous and crystalline solids. Polycrystalline solids have regular arrangement of particles, but that regular arrangement is in short portion, and that portion is known as grain. As shown in this figure, the crystalline solids have regular arrangement of particle which is periodic across the whole crystal, whereas amorphous solids have irregular arrangement of particles as shown in this figure. And the polycrystalline solids which have the regular arrangement but in the small portion, and that small portion is known as grain. So polycrystalline solids इन बिटवीन है किसके क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड्स के, क्योंकि उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट तो है बट स्मॉल पोर्शंस में वो अरेंजमेंट है, और उन स्मॉल पोर्शंस को हमने ग्रेन कहा है. पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि कुछ मेटल्स एटसेट्रा. तो अब तक हमने ये डिस्कस किया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है. तो इस पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं. फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्रिस्टल लेटिस, इस वर्ड में लेटिस का क्या मतलब है? लेटिस इज सेट ऑफ इमेजिनरी पॉइंट्स दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल. तो लेटिस एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पेस में पॉइंट्स के अरेंजमेंट को बताता है, और ये जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? These points are known as lattice points. Lattice points. Lattice points are the positions which are occupied by an atom, ion or the molecule. Lattice points वो points होते हैं जिनको हमारे constituent particles occupy करते हैं, और इन्हीं constituent particles को हम bases बोलते हैं. So, when a bases are arranged at the lattice points, they form a crystal structure, and this arrangement can be done in the various ways. So, जब bases lattice points को occupy करते हैं, तब हमारा एक crystal structure form होता है. For example, a lattice can be of 2D and 3D. Lattice 2 dimension भी हो सकती है और 3 dimension भी हो सकती है. For example, first we see 3 dimension lattice and then we see a 2 dimension lattice. This figure shows that this is the 3D lattice. It is a cube which is a 3D structure. So this is the 3D lattice, and when bases or motifs, these bases are also known as motifs. So when these bases or motifs, which are the constituent particles, they occupy the lattice, a crystal structure is formed.
which is just the sum of lattice and the bases. This is our 2D lattice. Now let us discuss 2D lattice. Example, this figure shows 2D lattice. This is the 2D lattice. And what is lattice? Lattice is the set of imaginary points. Now, when these points which are known as these constituent particles which are known as bases, they occupy the lattice, a crystal structure is formed. So, in short, we can say that a crystal is the sum of lattice and the basis points. And when the bases occupy the lattice points in the lattice, a crystal structure is formed. So, we can define crystal lattice as crystal lattice is the regular arrangement of particles or points in space. Now let us discuss what are the characteristics of the crystal lattice. अब हम crystal lattice के कुछ characteristics discuss करेंगे. Each point in the crystal lattice is called lattice point. हमें पता है this figure shows these orange marked points are known as lattice points. Each point in lattice represents a constituent particle which may be an atom, ion or the molecule. So when somebody asks a question from you that tell me the significance of the lattice point, then you have to say that the significance of the lattice point is that they are the constituent particles which may be an atom, ion or the molecule. And when we join these lattice points together by the straight lines, we can easily determine the geometry of our solid. For example, let us draw a 2D lattice in which these red circles are representing the lattice points. And when we join them together by the straight line, we can easily determine the geometry of our solid. These are squares because now we are discussing 2D lattice. This is the 2D lattice. And this figure shows a 3D structure which is formed by the 3D lattice when the motifs or the bases occupy a 3D structure. And in both the cases, this smallest portion, in this lattice, this 2D portion, this blue marked portion is known as unit cell. In this figure also, a 1 cube or just this portion is known as the unit cell. So unit cell, in short, we can say that unit cell is the replica of the crystal structure. इसका मतलब है कि यूनिट सेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको जब हम डिफरेंट डायरेक्शंस में रिपीट करेंगे, तब हमारा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा. So the unit cell is the smallest portion of the crystal which when repeated in the different directions result into the crystal formation. Now let us see the definition of the unit cell. The unit cell, the smallest unit in the crystal which when repeated in the different directions forms the complete crystal, is known as unit cell. As shown in the previous diagram, that this small cube, this 1 cube is the unit cell of this crystal structure. Now let us discuss what are the characteristics of the unit cell. Unit cells के क्या characteristics हैं?
यूनिट सेल्स के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके 3 एक्सियल डिस्टेंसेस या फिर उनको हम एक्सियल लेंथ्स भी कहते हैं, और उसके 3 एक्सियल एंगल्स. This figure shows one unit cell in which these A, B and C are the axial distances or the axial lengths. These axes, say this is our Z axis. Axis system na, Z axis, this is Y axis and this is X axis. Since it is unit cell is a part of crystal, so these axes are known as the crystallographic axis. Crystallographic axis. और इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस में हमें 3 एक्सियल लेंथ्स होते हैं, A, B एंड C, और 3 एक्सियल एंगल्स होते हैं. जो एंगल एक्सियल लेंथ A और B के बीच में फॉर्म हो रहा है, A और B के फॉर्म में, ये वाला, this angle is known as gamma angle, and the angle which is formed between B and C is known as alpha angle, whereas the angle between A and C is known as the beta angle. इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे अगर A और B हमारे एक्सियल डिस्टेंसेस हैं, तो उससे जो भी नेक्स्ट बचेगा, जैसे गामा साउंड टू बी फ्रेंडली ना, उससे जो डिफरेंट होगा वो वाला हमारा एक्सियल एंगल होगा. सो अब आपसे कोई भी पूछे, ये आपकी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट सेल, देन यू हैव टू से दैट देयर आर 6 characteristics of a unit cell, 3 axial lengths which are A, B and C, and 3 axial angles alpha, beta and gamma. These axial lengths, this is a note for you that these axial lengths may or may be perpendicular to each other. Now we will discuss what are the types of unit cell. So on the basis of position of the atoms, unit cell is divided into 2 main types: primitive unit cell and non-primitive unit cell. In primitive unit cells, atoms occupy the corner position. सो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो हमारे एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर वाली पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस फिगर शोज अ 2D lattice and this figure shows a 3D lattice. Here also the particles are present at corners only. This is the unit cell, this is the unit cell, and this is also the unit cell. And in 3D lattice case, this is the cube and the particles are present on its each corner. And in cube, we know that there are 8 corners, 12 edges and 6 faces. This information is very helpful in this solid state chapter, and we all know that. So in the primitive unit cell, particles are present only on the corners, whereas in the non-primitive unit cells, particles are present at corners but also at the some other positions. सो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, पर उनके साथ साथ वो कुछ और पोजीशंस पे भी होते हैं. एंड बेस्ड ऑन दोज अदर पोजीशंस वी विल फर्दर classify non-primitive unit cells into other categories, which are body-centered, and that was represented as BCC, FCC when the particles are present on center as well as center of each face, and the end-centered unit cell.
and we will discuss it in the next slide. This figure shows a 2D lattice and this shows a 3D lattice. Here also the particles are present at corners but also at this position. So this is the example of the non-primitive unit cells, and here also the particles are present at corner but also at this position. So this is example of non-primitive unit cell. Here also the particles are present on corners and at the body centered position. So this is the body centered unit cell. Now, primitive unit cells are also known as the simple cubic unit cell, SCC. And the other name for the non-primitive unit cell is the centered unit cell. Now, sometimes in competitive exams like JEE, IIT JAM and CSIR NET, a question is asked from this topic, whether they will give you the structure of the unit cell and they ask you that tell me that which of them is the unit cell and which is not, and which one is primitive and which is non-primitive. Now we will discuss the classification of the non-primitive unit cell. Now, this flowchart shows that non-primitive unit cells are further divided into three main categories, which are body-centered unit cell, face-centered unit cell, and the end-centered unit cell. In most of the exam, body-centered is represented as BCC, face-centered is represented as FCC. Now, in the body-centered unit cell, particles are present at corners plus center of the body. इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो. देखो, यूनिट सेल को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है आप अपने रूम को देखो. आपके रूम के 8 कॉर्नर्स इन कॉर्नर वाले 8 पार्टिकल्स की तरह हैं, और जब आप अपने रूम में बैठे हो, से कि आप अपने रूम के बिल्कुल सेंटर में बैठे हो, तो आप बॉडी सेंटर्ड के सेंटर वाला पार्टिकल हो. ओके, इस चीज को समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल या फिर सबसे अच्छी बात आप अपने दिमाग में ये रख सकते हो कि आप अपने रूम को एज्यूम कर लो. ठीक है. नाउ कमिंग टू आवर डिस्कशन, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर में भी प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के सेंटर में भी. दिस इज क्लियरली शोन इन दिस डायग्राम where the particles are present at corners and this body centered. Here, यहाँ पे मैंने ये दो कलर्स, 2 डिफरेंट कलर्स इसलिए शो करे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके. यूनिट सेल के अंदर ये दोनों एटम, आयन और मॉलिक्यूल सेम आयन्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट आयन्स भी हो सकते हैं. फॉर इजीनेस आई हैव शोन them from different colors. Now, face-centered unit cell. In face-centered unit cell, particles are present at corners plus center of each face of the cube. क्यूब के हर एक फेस में भी एक पार्टिकल है. 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, तो ये 6 पार्टिकल हैं. ये इस वाले फेस के लिए, ये वाला फ्रंट वाले फेस के लिए, एक ये बैक वाले के लिए. दिस वन इज फॉर टॉप फेस एंड दिस वन इज फॉर बॉटम फेस एंड दिस वन इज फॉर दिस फेस. So 6 face, so 6 particle at the center of each face plus particles at the corners. Now, the end-centered unit cell. The other name for the end-centered unit cell is the alternate face-centered unit cell. It means कि जो particles हैं वो कहाँ present हैं? Corners पे तो present है ही, plus at center of 2 opposite faces. And what does this opposite face means? It means that कि particles corner पे भी है और particle दो ऐसे फेजेस में है, उनके दो ऐसे फेसेस के सेंटर में है जो एक दूसरे के अपोजिट है, और वो
टॉप बॉटम भी हो सकते हैं, फ्रंट बैक भी हो सकते हैं, एंड लेफ्ट राइट वाले भी हो सकते हैं. Okay, so we have three possibilities here, and I have shown only one, top and bottom one. It can be front and back. So the thing is, the particle must be present at the center of the two opposite faces. So the other name for the end-centered unit cell is the alternate phase center. So in short, we can say that in the primitive unit cell the particles are present at only the corners, and the other name for the primitive unit cell is the simple cubic unit cell, whereas in the case of non-primitive unit cell, particles are present at corners plus at some other positions, and that other position can be the body centered for the body centered unit cell, and can be the center of each face of the cube. So it is face center, and at the center of two opposite faces, so it is the end centered unit cell. Now we will calculate the number of the lattice points in each unit cell. So for understanding and for calculation of the number of the lattice points in each unit cell, you have to understand some key points. Those are: number one, that the particle present at the corners, जो पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो अपने यूनिट सेल को कितना कॉन्ट्री कर रहा है, वो अपने यूनिट सेल को सिर्फ 1/8 कॉन्ट्री कर रहा है. इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल, दिस इज द यूनिट सेल ना, this is one unit cell, and when unit cell repeat in different direction, a crystal structure is formed. So this is one unit cell, and this is our primitive unit cell और दी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. तो अब देखो, हमारी केमिस्ट्री में हम एक सबसे ज्यादा जनरल एजम्पशन क्या करते हैं, ऑल दी एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल. हम हमारे एटम्स को स्फेरिकल कंसिडर करते हैं. तो देखो इस पॉइंट पे फोकस करो, एक पॉइंट पे फोकस करो. से वी टेक दिस पॉइंट. This is the part of how many unit cell? This is the part of 8 unit cell. This one, and this one. So only इसका जो contribution इस unit cell को होगा वो only 1/8 होगा. Okay. This was best explained by this figure. This only 1/8 portion. किसी भी इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं ना एक स्फेयर में, तो स्फेयर का 1/8 पोर्शन ही एक यूनिट सेल में कवर हो पाता है. ठीक है. सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर is only 1/8 to that unit cell. Now when the particle is present at the body centered position, जब कोई पार्टिकल किसी यूनिट सेल में उसके बॉडी सेंटर पे होगा तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा. से कि ये मेरा पार्टिकल है जो इसके बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है. तो अब देखो ये पार्टिकल तो और किसी यूनिट सेल के साथ शेयर ही नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ इसी यूनिट सेल के अंदर है ना. तो ये किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहा, इसीलिए जो भी पार्टिकल यूनिट सेल के सेंटर में होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा. क्योंकि देखो आप अपने रूम में बैठे हो, पूरे के पूरे अपने ही रूम में बैठे हो ना, दूसरे वाले अपने साइड वाले रूम में तो नहीं बैठे, तो आपका पूरा कंट्रीब्यूशन अपने रूम में होगा. So the particle which is present at the body center have the contribution of 1. Now we will discuss the face center. जब पार्टिकल फेस किसी फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ हाफ होगा. फॉर एग्जाम्पल से कि ये मेरा एक फेस है, ये मेरा एक फेस है, और यहाँ पे इस फेस के सेंटर में यहाँ पे ये पार्टिकल प्रेजेंट है. अब देखो
जो ये वाला पार्टिकल है, ये तो सिर्फ जो ये वाला पार्टिकल है ये तो सिर्फ इस वाले यूनिट सेल में का पार्ट है और सिर्फ इस वाले यूनिट सेल का पार्ट है। तो ये पार्टिकल जो है स्फेयर है, हाफ पोर्शन इसका इस वाले यूनिट सेल में है और इसका हाफ पोर्शन इस वाले यूनिट सेल में है। सो दस द पार्टिकल प्रेजेंट at the center of each phase has the contribution of only the half. Okay, इसको ऐसे समझो, देखो ये हमारा एक फेस है और इस फेस के सेंटर में हमारा एक स्फेयर प्रेजेंट है। अब ये इस वाली यूनिट सेल में भी शेयर हो रहा है, इस वाले में भी। सो इसका जो हाफ है वो इस वाले यूनिट सेल में आ रहा है और हाफ इस वाले यूनिट सेल में आ रहा है। सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच फेस इज ओनली द हाफ। Okay, so now we will calculate the number of the lattice points in our each unit cell, and the number of lattice point in each unit cell is represented by the letter Z, and this is very helpful for us in our upcoming density calculations. Now we will see for the simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell में कितने particles होंगे? देखो हमें पता है कि simple cubic unit cell में particles तो सिर्फ corners में ही present होते हैं, और कितने corners होते हैं हमारे cube के? 8 corners होते हैं. So for 8 corners मतलब 8 particles, and one particle का कितना contribution होता है? One particle contributes only the 1/8. सो 8 पार्टिकल्स कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? तो हमारा Z कितना हो जाएगा? 8 into 1/8 which is equal to 1. Now, so in the simple cubic unit cell there is only the one lattice point. Okay. Now we will discuss for the body centered unit cell. देखो body centered unit cell में क्या होता है? हमारे particles corner में present होते हैं, body के center में present होते हैं. This is the space fill model. Okay, and this is the open structure. This is the actual scenario. I have told you ना कि atoms को हमने क्या assume कर रखा है? Spherical, and these green ones are the corner ones, and this pink one is the central one. So now we will calculate the lattice points in the body centered unit cell. Now in body centered unit cell we have 8 particles present at the corners and 1 at the center of the body. And we will also discuss that one particle present at the corner contributes how much? 1/8. So Z will be equal to 8 into 1/8, because one particle contributes 1/8. So 8 contributes 8 into 1/8, and one particle is present at the center of body and that contributes 1, because that was present in the one unit cell only and is not shared by any other unit cell. आपके ट्रू फॉल्स या ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम्स में आती है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या एटम किसी यूनिट सेल के साथ शेयर होता है या नहीं होता बॉडी सेंटर्ड वाला? तो द आंसर इज दैट इट इज नॉट शेयर्ड बाय द एनी अनदर यूनिट सेल. नाउ द Z effective for the BCC is 2. 1 plus 1 equal to 2. Now we will see for face-centered unit cell and the end-centered unit cell. Now first we discuss the case of the face-centered unit cell. This is the space-fill model, and this is the structure showing you actual scenario, that this is the 1/8 portion and this is the half portion. Now in the face-centered unit cell, you know that particles are present at corners, and these are 8 particles, and the particles are present at center of each phase. And in cube there are how many phases? 6 phases. So each phase have 1 particle, so 6 particles. These corner particles contributes how much? This contributes 8 into 1/8, and this
6 particles which are present on the face centered positions contributes how much? 6 into half, because one particle present at the center of the each phase contributes half to that unit cell and half to another one. So Z for the FCC is 1 plus 3 equal to 4. Now एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हमें पता है कि ये फेस कि इसमें क्या होता है, सिर्फ 2 अपोजिट फेसेस में पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर और 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. दिस इज, नाउ लेट मी ड्रॉ अ क्यूब. दिस इज क्यूब and the particles are present on corners as well as the body center. These red one shows the particles present at the corners and say the blue ones shows the particles present at the center of the two opposite faces. So Z क्या होगा हमारे एंड सेंटर के लिए? लेट्स सी इट. 8 particles are present at corners and particle present at corner contributes how much? 1 by 8. And only the 2 particles are present at the center of face and those contributes half because these are present at the face center. Okay, so Z is 1 plus 1 which is 2. So in short we can say that what is the value of Z? Z is 1 for our simple cubic unit cell and Z is 2 for the body centered unit cell and Z is 4 for face centered unit cell and Z is 2 for the end centered unit cell. Okay, that's all for this video. Thank you for watching. In the next video, we will discuss the crystal systems. Okay, bye-bye. Stay safe, stay healthy.